Okay, so hello everybody, good morning and welcome to the EduphoreIAS the Hindu analysis series. Today the date is 22nd of July and we are starting with the front page of the today's Hindu. ठीक है? So सबसे पहले देखते हैं कि आज के पेपर से क्या इम्पोर्टेंट है. So most important जो front page पे आपकी एक न्यूज़ है that is related to India Sri Lanka relations, bilateral relations basically. So हुआ क्या कि कल ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के रानी विक्रमसिंघे जी वो बायलैटरल विजिट में है इंडिया के. ठीक है? सो यहाँ आए, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने मीटिंग की है. मीटिंग जनरली हैदराबाद हाउस में होती है. आप लोगों ने न्यूज़ में जरूर सुना होगा. बायलैटरल टॉक्स हेल्ड एट हैदराबाद हाउस इन दिल्ली इटसेल्फ, नॉट इन हैदराबाद. रिमेंबर नेम भी हैदराबाद है बट डजंट मीन कि इट इज इन हैदराबाद. ओके, सो इस तरीके से कुछ कॉपरेशन, कुछ एग्रीमेंट साइन हुए. ठीक है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे एंड ये भी देखेंगे कि इंडिया का स्टांस क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया श्रीलंका रिलेशन. एंड आप सबको पता होगा कि जैसे कि बीओपी क्राइसिस श्रीलंका में, एंड आपने देखा होगा कि काफ़ी जनता प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के हाउस तक पूरी जनता ने विद्रोह सा कर दिया था श्रीलंका में कुछ टाइम पहले. लास्ट ईयर की बात है. सो उस केस में बीओपी जब क्राइसिस हुई, जब ये सारी क्राइसिस हुई, तो ओवर द टाइम गवर्नमेंट ऑफ दिस श्रीलंका जो है उसको काफ़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, स्पेशली फॉर रिजर्व रिलेटेड क्राइसिस की. तो उस टाइम पे इंडिया ने कुछ हेल्प किए, लाइक करेंसी स्वैप मैकेनिज्म यूज़ किया गवर्नमेंट ने, जिसमें श्रीलंकन जो रुपी है उसके बदले में उनको इंडियन रुपी दी गई. श्रीलंकन करेंसी के बजाय उसकी जगह पे इंडिया ने अपनी कुछ इंडियन रुपी भी दी और साथ में कुछ डॉलर्स भी दिए. ठीक है, सो दैट श्रीलंका जो क्राइसिस फेस कर रहा था, बीओपी क्राइसिस एंड डोमेस्टिक क्राइसिस, उससे बाहर आ सके. सो उस चीज़ को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट किया है. ठीक है, एंड उसको एक्नॉलेज किया इनफैक्ट श्रीलंका प्रेसिडेंट ने ड्यूरिंग दिस विजिट. सो ये सारी चीज़ें मोटे मोटे तौर पे इसमें है. एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर और जो एलिमेंट है दैट इज तमिलियन पॉपुलेशन. ठीक है, जैसे मैंने परसों कल के हमने उसमें देखा था कि कच्छद्वीप आइलैंड है जो श्रीलंका ये अपने इंडियन ओशन में, सो श्रीलंका के आसपास तमिलनाडु बेसिकली एंड श्रीलंका के बीच में ही पड़ता है. तो कहीं ना कहीं उस पर हमारे जो सीएम है एम.के. स्टालिन ऑफ दिस तमिलनाडु, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की थी कि कच्छद्वीप आइलैंड पे एंड साथ में तमिल पॉपुलेशन जो रिजाइड कर रही है श्रीलंका में, जो कि 200 साल पहले गई थी. ठीक है, तमिलनाडु से, एंड इस टाइम पे श्रीलंका में है जो कि माइनॉरिटी में है. रिमेंबर बिकॉज जो कम्युनिटी है, आपने सुना होगा कि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है दैट इज कॉल्ड सिन्हालास. ठीक है, एंड माइनॉरिटी में जो है दैट इज तमिलियंस. ठीक है, सो इसके लिए एक गवर्नमेंट हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट एक 13th अमेंडमेंट की बात करती है जो कि श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में है 13th अमेंडमेंट. नाम ये 13th अमेंडमेंट किसी से रिलेटेड है. सो 13th अमेंडमेंट जो रिलेटेड है वो है 9 प्रोविंसेस और जो स्टेट्स हैं श्रीलंका के उनसे, कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो इनको पावर डिवॉल्व करेगी. ठीक है, पावर देगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को. ठीक है, 9 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इंक्लूडिंग सिन्हाला मेजॉरिटी स्टेट्स एज वेल, बट मेजॉरिटी तौर पे अगर देखो तो कौन है उसमें पॉपुलेशन रहने वाली तमिलियंस. ठीक है, उसके अब ये पावर डेवोल्यूशन किस फील्ड में, सो पावर डेवोल्यूशन की जो फील्ड है दैट इज लेट अस से हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड, पुलिस, फाइनेंसिंग एटसेट्रा. सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें कि श्रीलंकन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर डिवॉल्व करना है टू स्टेट्स और द प्रोविंसेस ऑफ 9 प्रोविंसेस ऑफ श्रीलंका. ठीक है, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 13th अमेंडमेंट रिलेटेड किससे है, तो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू द 9 प्रोविंसेस और स्टेट्स ऑफ श्रीलंका बाय द श्रीलंकन सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, चलो. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी raises aspirations of Tamils with Rani. PM calls for implementation of 13th amendment. I have already explained what is 13th amendment. And provincial elections. So provincial elections, provinces are basically like states in India. ठीक है, जैसे हम simultaneously use करते हैं provinces और states.
ठीक है। सो प्रोविंशियल इलेक्शंस के स्टेट में जो इलेक्शंस है वो भी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने हमारे इन दोनों ही मुद्दे को उठाया है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन द आइलैंड कंट्री। Sri President lauds India for support offered during financial crisis over the past year. ठीक है, sure. So see, welcoming Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe to India, Mr. Modi said both sides had held talks on a number of infrastructure projects that could ensure greater connectivity between the two countries. He also announced a development assistance package for the Tamils of Indian origin who are marking the 200th anniversary of their arrival in the island nation. So जो तमिलियंस हैं जो इंडिया से गए थे, माइग्रेट कर गए थे श्रीलंका में, so उनकी जो है 200वीं एनिवर्सरी है, तो इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल असिस्टेंस पैकेज अनाउंस किया है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका. He said we also talked about the reconstruction and reconciliation in Sri Lanka. President Wickremesinghe presented his inclusive approach. Inclusive approach जिसमें कि सारी without any discrimination सारी जो community है, बीट सिंहाला, तमिल्स, सबके डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए. Fine, inclusive growth. We hope that Sri Lanka will fulfill the aspirations of the Tamils. This is what expected by our Prime Minister. Fine. Apart from that, also our Prime Minister expects that Sri Lanka will take forward the process of rebuilding for equality, justice and peace. We hope that Sri Lanka will fulfill its commitment to implement the 13th Amendment and to hold provincial council elections. So this is the expectation expressed by our Prime Minister. Further, President Wickremesinghe expressed his government's profound appreciation for the support that India has extended to Sri Lanka over the past year, which he described as the most challenging period in Sri Lanka's modern history. So जैसा कि मैंने क्राइसिस के बारे में ऑलरेडी बता दिया है स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे भारत ने काफी आगे बढ़ के मदद की श्रीलंका की. So that's why he is, not just acknowledging that but also expressing his gratitude for the same. ठीक है. So कुछ डेवलपमेंट्स हैं. Two sides exchange documents on cooperation in the fields of animal husbandry, renewable energy, development projects in Trikomali district in eastern Sri Lanka and online payment services between the two sides. ठीक है. तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिस पे कि दोनों कंट्री ने एक्सचेंज किया और साइन किया. ठीक है. Okay, next is this news is related to Yamuna. ठीक है. उसके बाद इधर आते हैं हम. PM's absence in both houses spurs opposition protest. ठीक है. सो आपको पता है कि इंडिया नाम से कोalition बनाई है अपोजिशन पार्टीज ने, एंड सिंस दिल्ली सिविल सर्विसेज रिलेटेड कुछ ऑर्डिनेंस है या मणिपुर इशू है, तो उस पर डिस्कशन चल रही है. जैसा कि मॉनसून सेशन चल रहा है अभी इस टाइम पे ये अपने पार्लियामेंट का, तो उसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर कल नहीं प्रेजेंट थे, तो इस वजह से जो अपोजिशन की अलायंस है कॉल्ड इंडिया, इसने अपनी वोट प्रोटेस्ट किया. ओके. इसके बाद ये केस जो कल सुनवाई होने वाली सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे डिक्लाइंस अराउंड ऑन दिस प्ली सीकिंग इंटरिम सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन. सो क्या किया है, सस्पेंशन जो है फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ मिस्टर गांधी, इसको स्टे नहीं किया है, एंड इन फैक्ट द नेक्स्ट डे दिस डेट ऑफ हियरिंग जो है वो वाज 4th कोर्ट. ठीक है. तब तक इस अंडर सस्पेंशन ही रहेंगे. उसके बाद मोर केसेस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट ऑफ वुमेन सप्रेसिंग इन मणिपुर, जो कि कल की न्यूज़ है उसी में कंट्रीब्यूशन में है. विल नॉट नोटिफाई फैक्ट चेकिंग अंटिल September 4 स्टैंडर्ड टेस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट. और फैक्ट चेकिंग यूनिट है क्या, इट इज कॉल्ड FCU. ठीक है. सो एक हमारे पास एक गवर्नमेंट एक्ट लेके आई थी, बिल लेके आई थी, दैट इज कॉल्ड IT इंटरमीडिएट गाइडेंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जिसको कि अमेंड किया गया है 2023. इस 2023 अमेंडमेंट ने एक चीज ऐड की, दैट इज FCU फैक्ट चेकिंग यूनिट्स. आप लोगों ने देखा होगा कि डिजिटल
में क्या होता है कि सपोज आप कुछ भी वायरल हो जाता है, उसकी वजह से क्लैशेस हो जाते हैं ना, कम्युनल वायलेंस एंड नंबर ऑफ थिंग्स इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उस चीज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था कि हम इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू एक एफसीयू सेटअप करेंगे इंडिया में। ठीक है, न्यू रूल्स रिक्वायर सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज कौन सी होती हैं, लाइक यू हैव मेटा, फेसबुक, ठीक है, इवन गूगल एंड ऑल, जो बिग जायंट्स हैं सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज जो हैं, टू मॉडिफाई और डिलीट कंटेंट इफ द एफसीयू डायरेक्ट्स देम टू डू सो। सो एफसीयू का जो कोर फंक्शन है वो ये कि ये चेक करेगी, इसलिए नाम ही इसका फैक्ट चेकिंग यूनिट। ठीक है, इसको लगता है कि हाँ भाई कोई गड़बड़ी है, कोई डिसइंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी एलिमेंट इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में जो इंडियन सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, या कुछ सोसाइटी में कम्युनल काइंड ऑफ वायलेंस हो सकती है। तो इसलिए क्या इस अगर फैक्ट चेकिंग यूनिट ने एक बार कह दिया इंटरमीडिएट सोशल इंटरमीडिएट्स को कि इसको टेक डाउन, ठीक है, इसको हटाओ, तो उनको हटाना ही होगा, दैट्स द फाइनल। ठीक है, सो इसलिए बट अभी क्या है कि कुछ जो कंसर्न्स रेज की गई थी, कुछ लोग हैं, फॉर एग्जांपल बॉम्बे कोर्ट वाज हियरिंग अ पिटीशन फाइल्ड बाय पॉलिटिकल सैटिरिस्ट कुणाल कामरा, the Editors Guild of India and the Association of Indian Magazines and Television Channels. They are all challenging the constitutional validity of the IT amendment rules itself, जिसके अंडर ही इस FCU को सेटअप करना है। ठीक है, सो जब अमेंडमेंट ही चैलेंज है तो ऑफ कोर्स बॉडी सेटअप करने की भी जो क्वेश्चन है वो राइज नहीं होता, इट इटसेल्फ स्टैंड्स चैलेंज। ठीक है, सो इसलिए कल की सुनवाई में हमारे एजी साहब सोलिसिटर जनरल जो रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उन्होंने ये कहा कि हम इसको तब तक लागू नहीं करेंगे, नोटिफाई नहीं करेंगे सितंबर 4 तक, क्योंकि पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो जाती। ठीक है, बिकॉज ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, नॉट सुप्रीम कोर्ट बट ही इज एक्चुअली बिजी विद द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 रिलेटेड हियरिंग, सो दैट्स व्हाई ही सेव फॉर द टाइम। Under the new rules, the content marked by the FCU as fake or misleading will have to be taken down by the online intermediaries if they wish to retain their safe harbor. So safe harbor क्या है? Safe harbor is a clause under which these social intermediaries like Facebook, Amazon, Google and all, they are being provided with some legal immunity, ठीक है, or protection from legal liability if they provided they fall in line with the guidelines or the provisions of this act, IT Act. ठीक है, सो अगर आप कुछ चीजें मानोगे तो आपको कुछ इम्यूनिटी दी जाएगी, अदरवाइज इट वोंट बी लाइक कि आप अपने हिसाब से चलो और फिर आपको कुछ प्रोटेक्शन भी दी जाए, isn't it? It's not just about giving and giving, it's all about give and take. So कुछ दोगे तब कुछ मिलेगा, right? Okay, so this is it about this news FCU. Okay, उसके बाद फिर से लोकल न्यूज़ दिल्ली रिलेटेड, जो दिल्ली से हैं वो इसको फॉलो करेंगे। आफ्टर दैट जो पेजेस अगले पेजेस जो होते हैं वो मोस्टली पॉलिटिक्स रिलेटेड, यू सी ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, सो इसमें हमें ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर कुछ पॉलिटी रिलेटेड कुछ जैसे अभी मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो उसमें हो सकता है कि कुछ आपको फॉर एग्जांपल कोई बिल पास हुआ हो, कोई लॉ आया हो, कोई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है, तो उसको प्लीज डू ट्रैक दैट न्यूज़। Proposals to increase reserve seats in Assam widely welcomed by the organizations poll panel. So Chief Election Commission of India, being led by its Chief Election Commissioner कौन है इस टाइम पे, राजीव कुमार, ठीक है, so he interacted with the political parties of Guwahati and Assam में कुछ proposal है कि seats जो है reserve seats उसको increase किया जाए for the reserve communities, and जो भी असम की लोकल पार्टीज हैं, डिफरेंट पार्टीज, उन्होंने इस चीज़ से अग्री किया है, असम में वेलकम किया इस चीज़ को। तो देखते हैं क्या कैसे सीट्स की इंक्रीमेंट होती है इसमें। ठीक है, ओके, फर्दर मूविंग अहेड, फिर से सारा कुछ में देखोगे तो मोर और लेस आपके जो है पॉलिटिक्स ही है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज मोस्ट important pages of any newspaper, and that is editorial. आज के एडिटोरियल पे दो आर्टिकल्स हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड दोनों ही मोर और लेस वुड बी रिलेटेड टू द आईटी सेक्टर, आईटी फील्ड और मीडिया सेक्टर, ठीक है, मोर और लेस। वन वुड बी रिलेटेड टू द इंटरनेट बैन एंड अदर इज रिलेटेड टू द पब्लिशर प्लेटफॉर्म इम्बैलेंसेस। सो इस ये आर्टिकल है किससे रिलेटेड? बेसिकली इस आर्टिकल में ये बात की जा रहा है
की जा रही है कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा, सपोज दोज हु यूज सोशल मीडिया, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल, आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे आपको न्यूज़ आजकल मिलने लग गई है, ठीक है, डिजिटल न्यूज़, या गूगल पर भी आप न्यूज़ सर्च कर लेते हो, कहीं कहीं आपके न्यूज़ पेपर की सपोज क्लिपिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है। सपोज कोई न्यूज़ कवर हुई है आज के न्यूज़पेपर में, पब्लिश किया गया है किसी न्यूज़पेपर के द्वारा, एंड वो सेम न्यूज़ आपको गूगल में सपोज फ्री में मिल रहा है, या किसी लेट अस से XYZ प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको कंटेंट, सेम कंटेंट फ्री में मिल रहा है. So somewhere it is a loss for the newspaper itself, for the publishers, isn't it? Because इससे क्या हो रहा है कि जो big giants हैं like Google and this Facebook और Meta, ये अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना बिजनेस तो ग्रो कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली लॉस किसको हो रहा है बैक एंड पे? पब्लिशर्स को, जो रियल में कंटेंट को जनरेट कर रहा है, ठीक है, दे आर द रियल ओरिजिनेटर्स ऑफ दिस कंटेंट. फाइन. सो इस तरीके से एक इम्बैलेंस है दोनों के बीच में, पब्लिशर्स के बीच में एंड प्लेटफॉर्म्स के बीच में. प्लेटफॉर्म्स क्या है? बेसिकली दिस बिग जायंट्स लाइक गूगल, मेटा, और मेटा के अंदर सारे रहता है, फेसबुक, दिस इंस्टाग्राम एंड ऑल, ठीक है. सो देयर एग्जिस्ट सम imbalances that needs to be fixed. Now what are these imbalances? How we can fix them? We will be discussing these 2 points throughout this article. ठीक है, चलो. So how can our news media be safeguarded against the market power of the domineering search engines, social media giants, and other so-called big tech players, big technology related players, ठीक है, like Google. कि हमारे जो न्यूज मीडिया है, ठीक है, स्पेशली द प्रिंट मीडिया, उसको हम सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, उसको सेफगार्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे. सो दिस इज अ क्लासिक पब्लिक इंटरेस्ट मैटर सिंस द क्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिशर्स इज ऑफ डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस टू अ यूजर ऑफ डिजिटल न्यूज. बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप डिजिटल न्यूज सपोज गूगल पे डिजिटल न्यूज पढ़ रहे हो तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, डाइवर्सिटी क्या होगी एंड सस्टेनेबिलिटी किस हद तक होगी, इट डिपेंड करता है कि पब्लिशर किस पोजीशन में है. ठीक है, सो पब्लिशर की जो पब्लिशर है उसकी इन चीजों को मेंटेन रखने के लिए इज ऑफ डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस टू यूजर ऑफ फॉर्म. तो जो भी ये 3 चीजें हैं, दैट इज सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड क्वालिटी. सो इन 3 चीजों की वजह से हमारा जो है इंपैक्ट पड़ेगा किस पे? दैट वुड बी हैविंग कॉन्सिक्वेंस ओवर यूज ऑफ डिजिटल न्यूज, कि आपको न्यूज क्या मिल रही है, ठीक है, उसकी क्या क्वालिटी है. The numerous imbalances and fractures that scar the relationship between the news publishers and technology platforms are captured in 2 baskets of concern. So, 2 concerns हैं, 2 imbalances in the Hindi. We call it twin imbalances. Now, what are these 2? The first is absence of fair valuation. That is a matter of compensation. For example, अगर कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल, अगर वो किसी न्यूज पेपर की कंटेंट को यूज कर रहा है, ठीक है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, सो इजंट इट a matter of कि कंसर्न कि जो गूगल है वो कुछ कॉम्पनसेशन दे उस कंटेंट को यूज करने के लिए, ठीक है, बिकॉज आप किसी और की प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, सो यू नीड टू पे सर्टेन compensation for the same, isn't it? So therefore the first imbalance is related to the absence of fair valuation, कि उस पर्टिकुलर जो न्यूज है, न्यूज आर्टिकल है, आइटम है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, एंड दैट वुड बी फिक्स्ड और डिसाइडेड बाय compensatory mechanism, कि आप compensation पे करो उसके लिए. Second imbalance is that of enumerative accountability, that is a matter of transparency, कि अगर कुछ ऑनलाइन पब्लिश हो रहा है एंड उसमें कुछ ऐसी चीज पब्लिश कर रहे हो जिससे हो सकता है कि फेक हो या डिस इन्फॉर्मेशन है, सोसाइटी में कम्युनल वायलेंस हो जाए, सपोज है किसी भी तरह की वायलेंस हो रही है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है फिर? आइदर दैट द पब्लिशर इन द फर्स्ट हैंड, ठीक है, जिसने उसको पब्लिश किया है, और द वन प्लेटफॉर्म व्हिच इज यूजिंग द सेम कंटेंट, isn't it? So again it's a kind of imbalance. So this is the second imbalance, or these, or together you can say these are the twin imbalances between a publisher and a platform. I hope कि आपको ये 2 चीजें समझ आ गई होंगी कि 2 imbalances क्या हैं, क्योंकि जब तक ये को समझ नहीं आएगा, these are like 2 questions, तब तक हम आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है. Now the writer says that no doubt digital advertising revenues are jointly produced by publishers and platforms. ठीक बात है. However, publishers are hampered by a fair valuation of the share of such revenues generated by their journalism.
Moreover, they are entirely dependent on the terms imposed by the platforms operating under monopolist or duopolist conditions. So monopolist and duopolistic conditions, these are the the market forms which exist in economics basically, ठीक है. So monopoly की एक जो है एक जो सारी दिस अथॉरिटी है रिलेटेड टू दिस न्यूज़ आर्टिकल और जो भी पब्लिश हो रहा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के हाथ में है, ठीक है. होल सोल जो पावर है वो किसके हाथ में, एक प्लेटफॉर्म की या पब्लिशर की. सो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात करें, सो देयरफॉर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म हियर, ठीक है, बिकॉज़ ही और दैट प्लेटफॉर्म इज अ मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ इन द मार्केट. एंड सेकंड इज डुओपोलिस. इसमें क्या है कि दो लोग दो प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, डुओपोली, दो डबल, ठीक है. सो इसलिए ये दो कंडीशन डुओपोलिस्टिक और मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस हैं जिसके अंडर ये ऑपरेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स. Such dependency arises from platforms straddling multiple roles in digital news markets, especially as mediators in the search for online news content and as providers of infrastructure to publishers to participate in the online advertising market. So ये टू साइड ट्रैफिक है कि इससे क्या है कि दोनों को फायदा होना चाहिए. अगर न्यूज़पेपर वाले कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी कंटेंट यूज करके, सो ऑफ कोर्स आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उस कंटेंट को प्रमोट करो एंड साथ में कुछ कॉम्पनसेशंस भी प्रोवाइड करो, ठीक है. सो दिस वुड बी समवेयर अ बैलेंस्ड मैकेनिज्म. बट नाउ द सेकंड इम्बैलेंस इज इट स्टेम्स फ्रॉम द लैक ऑफ एनुमरेटिव अकाउंटेबिलिटी, जो हम यहाँ बात कर चुके हैं. तो इम्बैलेंसेस की उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं. Platforms unilaterally define the measures of the quality and popularity of online news. They arbitrarily change measures to suit their own priorities, often after imposing them on publishers in the first place. ठीक है? Often after imposing them on publishers in the first place. तो कहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये unilaterally define करती हैं अपने terms and conditions हैं, unilaterally measures लेती हैं, ठीक है, and rather they don't consult in the first place, ठीक है, with the publishers, rather they impose their decisions on the publishers. Further, they refuse to share the relevant data on advertising and viewership with the stakeholders in the news economy, including the regulators and other assessing the health of digital markets. So हमने imbalances की बात कर ली. Now solution क्या है? क्या वर्ल्ड वाइड किसी कंट्री ने कोई स्टेप्स लिए हैं या नहीं लिए, एंड इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इस केस में. So we'll be discussing that. So mitigation की बात हो रही कि दो imbalances को mitigate कैसे किया जा सकता है. इसके कॉन्टेक्स्ट में अभी तक वर्ल्ड वाइड कुछ स्टेप्स लिए डिफरेंट कंट्रीज ने, एंड फर्स्ट वाज इनिशिएटेड बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 2021 में tackled this by proposing a mechanism to govern the interaction between publishers and the platforms, but the platforms retaliated, ठीक है. जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हाँ इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, स्पेशली फेसबुक ने retaliated. Facebook blocked its Australian users from accessing thousands of news sites, ठीक है, online news sites, which included vital sources of public information during rampant wildfires and the COVID-19 pandemic. They only turned the news back on. उन्होंने तब इस बैन को या सस्पेंशन को लिफ्ट की जब after winning major concessions from the Australian government that were enshrined in the final draft of the News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code 2021. So you can see कि इनके पास पावर कितनी है. इन्होंने जो यूजर्स हैं उनको ही ब्लॉक कर दिया, उनको ही डिबार कर दिया फ्रॉम एक्सेसिंग द डिफरेंट न्यूज साइट्स, ऑनलाइन न्यूज साइट्स, ठीक है. एंड देन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रिलेंट करना पड़ा, कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंसेशन देना पड़ा फेसबुक को. तब फेसबुक ने इस जो बैन था, जो ये रेस्ट्रिक्शंस थी वो न्यूज साइट्स, उसको हटाया, ठीक है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं आज ये कंपनीज. Since then, उसके बाद क्या हुआ? Other governments have initiated different mechanisms to fix the imbalance between publishers and platforms. Last month क्या हुआ? Canada, the second country after Australia, Canada's Online News Act warranted fair compensation to publishers and the sustainability of local news.
ठीक है, ये सीधी सी बात है, इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज लोकल वेंडर्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो आपके गली मोहल्ले में आप देखते हो जो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, या छोटे जो किराना स्टोर्स हैं, अगर लगा लो कोई मल्टीपल कोई मॉल टाइप का कुछ कल्चर आ जाता है, कुछ बड़ी बिकॉज आजकल चल रहा है दिस डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सो वो अगर उस एरिया में ऑपरेट करना स्टार्ट करें तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है वो किस पे ज़्यादा पड़ता है, उन छोटे छोटे लोगों पे, छोटे जो भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, बिकॉज अल्टीमेटली उन पे तो असर पड़ रहा है ना, सारी दुनिया फिर वहाँ भागती है, समझ रहे हो। सो ट्राई टू रिलेट द सेम विद रिस्पेक्ट टू देम। हियर जो छोटे हैं वो कौन है, वो बेसिकली आपके न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, ठीक है, एंड जो बिग टेक जायंट्स हैं ऑफ कोर्स दे आर द प्लेटफॉर्म्स। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट कंट्री यूनाइटेड किंगडम यूके plans to introduce legislation to regulate the relationship between big tech and news outlets, ठीक है। सो यूके ने भी कुछ इस विद रिस्पेक्ट टू दिस कुछ स्टेप्स लिए हैं। इवन इन द ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ मेजरली वो कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, स्पेशली दोज who were once under colonial, let us say, rule, for example African nations, ठीक है, Latin Americans and even in Asia में अगर डेवलप को छोड़ दो, फॉर एग्जांपल जापान को छोड़ दो, जो वेरी ट्रेडिशनल साउथ कोरिया को छोड़ दो, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी, तो ऑस्ट्रेलिया में भी अदर कंट्रीज आ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इन नटशेल वी कॉल देम ग्लोबल साउथ, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ में कौन आते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज बेसिकली, वेस्टर्न नेशंस जनरली, where publishers in some countries are vulnerable to big tech that also provide access to the online world. Things are moving while steps are underway in Brazil as well and South Africa as well. Indonesia's proposed digital platform responsibility for quality journalism is set to materialize through a presidential decree. So इन countries ने अभी तक steps लिए हैं इस direction में, Indonesia, Brazil, South Africa. So of course these are the global South countries, ठीक है। The United States, अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स में कोई खास स्टेप्स नहीं है, बिकॉज़ ये सारी जो बिग जायंट्स हैं वो है कहाँ से ऑपरेट करनी है, इनमें से ऑफ कोर्स, सो व्हिच इज द होम ऑफ बिग टेक हैज येट टू रिवील इट्स कार्ड्स, ठीक है। सो ये सारी चीजें चल रही हैं। The vocabulary of these regulations varied and fascinating in itself, reflect different motivations and priorities. Nevertheless, फिर भी their overarching aim is to correct the twin imbalances, ensure news outlets sharing their content through search engines, social media or aggregators get a fair share of digital advertising revenues or compensations, and get visibility over the data generated by the platforms from selling and distributing online news, ठीक है। सो दो imbalances ध्यान रखना, फर्स्ट इज रिलेटेड टू compensation, सेकंड इज रिलेटेड टू accountability, ठीक है। सो इन दोनों को ही डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अगर ऐसा नहीं होता, कॉम्पनसेशन नहीं मिलती इनको, या रिकग्निशन नहीं मिलती, ठीक है, इसके साथ रेवेन्यू शेयर नहीं किया जाता, या ट्रैफिक शेयर नहीं किया जाता, व्यूअरशिप शेयर नहीं की जाती, सो ऑफ कोर्स सस्टेनेबल बिजनेस नहीं रह पाएगा इनका पब्लिशर्स का, एंड देयरफॉर दे विल हेजिटेट टू फर्दर इन्वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी जर्नलिज्म एंड ग्राउंड रिपोर्टेज, thereby ceding space in the digital public sphere to purveyors of misinformation and disinformation. So of course अगर ऐसा होता है तो ग्राउंड जो है वो किसके पास चली जाएगी, those who are the purveyors, fine, of like big giants of misinformation and disinformation, ठीक है, जो कि फैलाती है ये चीजें, fine. India's sluggish response, India का है, unfortunately India has been slow in thinking, talking, acting on mitigating these twin imbalances, so we are slow on this. In December 2021, the Union Minister of the State for Electronics and Technology denied in Parliament any desire to make big tech pay for news. ठीक है, so you can see कि इंडिया अभी prepared नहीं इस चीज के लिए. He revised his position the next year in 2022, and in recent months has been increasingly talking about the disadvantages news publishers face in their dealing with the platforms. चलो पहले 2021 में डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, 2022 में कहीं ना कहीं माना कि हाँ भाई कुछ ठीक है, ठीक बात चल रही है तो कुछ करने की जरूरत है। सो अब मिनिस्टर ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, इनफैक्ट increasingly talking about the disadvantage जो न्यूज़ पब्लिशर्स फेस करते हैं with respect to this big tech platforms। चलो एटलीस्ट बात तो शुरू हुई है तो सोल्यूशन भी निकलेगा। In 2021, the Digital News Publishers Association (DNPA) had filed a plea against Google in the Competition Commission of India,
the DNPA, that is Digital News Publishers Association, filed a plea against or case against Google for misusing its dominant position with respect to Competition Commission of India, ठीक है, which is an association of print, DNPA है क्या, is an association of print or group of print and broadcast publishers, ठीक है, print and broadcast publishers, accused Google of unfairly valuing their digital advertising share, not remunerating them for the snippets used by Google in its search results, and unilaterally deciding and arbitrarily altering the mutually agreed revenue sharing model. So these were the allegations put forth against the Google by the DNPA, which is an association of print and broadcast publishers. The DNPA also pointed out Google sidestepping its enumerated accountability as well, neither sharing granular data pertaining to the advertising revenue, nor disclosing the basis for calculating such revenues. So Google ना तो ये बता रहा है कि total advertising related data जो है कितने लोगों ने इस चीज को देखा, सब्सक्राइब किया, and ना ही total revenue जो इसकी वजह से जनरेट हुई वो शेयर कर रहा है, ठीक है. So this was one of the allegations were put by this DNPA against Google with Competition Commission of India. The fact presented by DNPA, not DNA, the fact presented by DNPA relevant for most are however not quite fruitful for, जो fact provide किया DNPA ने वो relevant तो जरूर है but not quite fruitful for evidence-based policy making. In January 2022, the CCI, Competition Commission of India, rightly asked its office to investigate the matter in a report to be submitted within 60 days. In February 2022, the Indian Newspaper Society (INS) filed a similar plea. It also highlighted Google's search results not being based on the relevance of news content, thereby creating an uneven playing field among various publishers. It was no surprise that the CCI clubbed the investigation into cases. So, एक तो DNPA ने केस फाइल किया था against Google. Second जो है Indian Newspaper Society ने against similar kind of plea file की with CCA against Google, highlighting the Google search results not being based on the relevance of news content. ठीक है? So कहीं ना कहीं credibility और quality of जो news है जो Google provide कर रहा है अपने search engines पे उस पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया. ठीक है? And now because nature of the दो petitions की थी जो plea की थी वो similar kind of थी, so CCA ने दोनों को club कर दिया. ठीक है? And एक बना करके और फिर इस पे सुनवाई स्टार्ट करी. The report of the Standing Committee on Finance in December 2022 on anti-competitive practices of big tech companies. So एक रिपोर्ट आई Standing Committee on Finance के द्वारा, ठीक है, इसे Committee of course Parliament. Echoed the concerns of the DNPA and the INS. So इस Standing Committee की रिपोर्ट ने सपोर्ट किया कंसर्न जो थी DNPA and INS की. It underscored that some digital markets are prone to dominance by one or two players and within a very short span of time. So dominance of one is called monopoly and dominance by two is called, let us say, duopoly. These both are sharing the dominance. ठीक है? In simple terms, that is before policies can be formulated and anti-competitive practices are adjusted. The Standing Committee recommended the urgency of evaluating the competitive behavior before digital markets become monopolized. So Standing Committee ने जो suggestion दी वो ये कि access किया जाए digital domain जो है उसको digital market को related to this publication of news and all before it can be monopolized further. This is in contrast with the current practices of the ex post in actual sense or retrospective evaluation, which is both time consuming and stretches estate capacity. Had the CCI's report been submitted on schedule, the Standing Committee would have been better informed about the imbalances between publishers and the platforms. This may have even motivated it to propose more concrete policy options or at least be less generic in its observation. Right? So first स्टांस देखोगे आप स्टैंडिंग कमेटी की जो इन्होंने सब रिपोर्ट पेश की है, जो सजेशंस दी कि बहुत ही जेनेरिक है. ठीक है? उन्होंने एक्नॉलेज किया कि यहाँ प्रॉब्लम है बट कोई खास प्रूव्ड सॉल्यूशन नहीं दिया. सो
सो ये कह रहे हैं राइटर कि अगर सीसीआई ने अपने स्टिपुलेटेड टाइम में 2 महीने में इससे करने की इन्वेस्टिगेशन अगर रिपोर्ट दे दी होती टाइम से, तो हो सकता था कि स्टैंडिंग कमेटी इसको टेकिंग इनटू अकाउंट दिस रिपोर्ट कुछ फर्दर क्रूड सॉल्यूशन देती, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट 60 वीक्स फॉर द सीसीआई रिपोर्ट, 60 वीक्स हो चुके हैं फॉर द सीसीआई रिपोर्ट व्हिच वाज टू हैव बीन सबमिटेड इन 60 डेज। सो 60 दिन के लिए 60 वीक्स हो चुके हैं अभी तक, पर रिपोर्ट नहीं मिली है। The imbalanced harming news publishers concomitantly harm readers. Concomitantly, naturally harm readers, of course, listeners and viewers of digital news. This then becomes a matter where the interest of the national news outlets clearly overlap with the public interest. At this moment, both these interests are in tension. The interest of a viewer, fine, and the interest of national news outlets and public interest, of course, if not under stress due to the conduct of global big tech. ठीक है, so of course जो है ये दोनों ही इंटरेस्ट जो है under stress है because of the such kind of global techs and the digital platforms which are actually somewhere they have monopolized this field of digital media, especially the digital news media. ठीक है, second important article जो है that is related to the of course Manipur, what's going on there, but the issue is different. It is about internet ban. So जब भी कभी कुछ वायरस होता है, कुछ होता है, so that कि और डिसइंफॉर्मेशन ना फैले, इस वजह से गवर्नमेंट्स क्या करती है, एज अ प्रिकॉशनरी टूल इंटरनेट को बैन कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इससे रिलेटेड। इज एन एडवोकेट अपार गुप्ता एंड द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। An internet ban will not restore peace in Manipur. So I hope that you can understand from the title itself what we will be focusing on the cases, instances related to the internet ban, and that will be more relevant from the exam point of view. Fine? Governance part. Okay, so Manipur is burning, but the rest of India did not care. The violence in the state began on May 3, 2023. May 3, May, June, July, August. Almost August 3 को 4 months हो जाएगा इस बैलेंस को, बट अभी तक कोई खास सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। But the nation was in a deep slumber till July 19. It took a video clip of sexual violence by a mob to surface and go viral on social media that day, and 78 days for the Prime Minister of India to take his silence. Okay, so here he is saying all this. To a certain extent, this is true as well, because you see, our public, news channels are much, interested in showing that what Sima Hazar is doing rather than what's been happening in Manipur. Fine. So of course, somewhere the neutrality of news media houses is of course under question itself. During this period, an internet shutdown has continued in the northeast state. What was its propriety and legal ground क्या था, and its role in our national apathy. ठीक है, sympathy, apathy. Okay. So कहते हैं कि इस बीच में during this period, ठीक है, अभी तक इंटरनेट शटडाउन है वहाँ पे मणिपुर में, continued in the northeast, ठीक है, but issue जो है that is what we are going to discuss here is what was the propriety, what was the legal ground for this or backing, and its role in our national apathy of this internet shutdown. Blanket order, no supporting data. So internet ban करने की जो order थी that was a blanket without having the supportive data. Let us check it. Data from the Telecom Regulatory Authority (TRAI) of India show that the people of Manipur access the internet primarily through their smartphones, and wired internet users primarily constitute institutional, commercial, and higher socio-economic groups. Out of total pie of 0.05 million wireline and 2.36 wireless million users, wireless means using over smartphones, and about 2.2 million connect to the internet. So लगभग 22 लाख ऐसे लोग हैं मणिपुर में जो इंटरनेट से कनेक्टेड और यूज इंटरनेट. The internet shutdown in Manipur, first enforced on May 3, is a case of blanket prohibition, blanket ban. The entire state is affected, and it is not a case of some of a total of 16 districts being affected. It covers all web traffic and mediums of connectivity. So it includes everything from the web connectivity, web traffic to this medium of connectivity as well, means whatsoever is the medium of connectivity, everything being shut down. The orders issued by the commissioner, ठीक है, ये होम
सेक्रेटरी जो है एक्चुअली इशू करते हैं ऑर्डर, उनके अथॉरिटी है ये ऑफ एनी स्टेट और लेट अस से द होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो कमिश्नर होम ऑफ मणिपुर अंडर द टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स यूज वेग लैंग्वेज इन ऑर्डर टू forward the design and activities of anti-national and anti-social elements by stopping the spread of disinformation and false rumors through various social media platforms, ठीक है। So इन्होंने कहा कि जो भी वायलेंस है उसको रोका जाए और किया जाए, how by taking this action of internet shutdown so that जो disinformation और misinformation फैल रही है मणिपुर में एंड जो कि वायलेंस को फर्दर फ्यूल कर रही है उसको कहीं ना कहीं रोक लगाया जाए। एंड वो कैसे हो सकता है? थ्रू इंटरनेट शटडाउन, बिकॉज दिस वर बेसिकली फ्यूल्ड बाय द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ डेटा और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस बीइंग प्रिवेंटेड ड्यू टू द जैमिंग ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो राइटर ये कहते हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये प्रूफ करे कि इंटरनेट बैन करने की वजह से जो वायलेंस है वो कम हुई हो। Before the weekly deadline lapses, a fresh order is passed where each order is a mere reproduction of the earlier one but with a minor changes in dates, thus making it clear that this could be indefinite. Fine? This could go on for indefinite. Okay. So one may wonder about compliance of following the reported Supreme Court of India judgment on internet shutdowns in Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir में भी काफी लंबे टाइम तक इंटरनेट शटडाउन, स्पेशली this post abrogation of article 370 स्पेशल जो स्टेटस है जो हटाया गया है जम्मू एंड कश्मीर से, तो वहाँ पे उसके बाद कोई वायलेंस ना हो इसलिए इंटरनेट को बंद रखा गया था, ठीक है, कनेक्टिविटी बंद रखी गई थी टाइम तक। सो उससे रिलेटेड एक केस हुआ जो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे सुनवाई की। दैट केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दैट इज देयर इज अ ब्रीच ऑफ डायरेक्शन दैट वाज मेड क्लियर इन अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया related to the banning of internet. In this period, reports have filtered in. These are besides the protests in Delhi and the information flow here. Delhi में भी कुछ वायलेंस हुई थी लार्ज स्केल पे, so वहाँ भी ऐसा कुछ इंटरनेट ऑफ कोर्स बंद करना पड़ता है, बंद किया जाता है, so that it further disinformation ना फैले और वायलेंस को फ्यूल ना करे. That document the injury being caused to the people of Manipur. Now the news is of extremes, from students from Manipur pursuing their education in the metropolitan cities, running out of money, to residents being unable to apply for their evacuation to relief camps. So इस तरह की न्यूज़ फैल रही है कि जो दिल्ली में सपोज मेट्रो सिटीज में जो मणिपुर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं they are running out of money plus और जो रेजिडेंट्स वहाँ के हैं they are unable to apply for the evacuation to relief camps. वहाँ पे जो लोग हैं लोकल वो रिलीफ कैंप्स तक नहीं पहुँच पा रहे हैं. These are such kind of news actually spread. Around May 19, petitions challenging these orders, such as Aribam Dhananjay Sharma versus State of Manipur, were filed in the High Court of Manipur. This is the second case. First is Anuradha Bhasin versus Union of India. This case in particular is vital to understand evolving jurisprudence of limited internet shutdowns. ठीक है, so ये केस इज इम्पोर्टेंट है with respect to understanding the jurisprudence that is legal this field of limited internet shutdowns. ठीक है, not only in Manipur but also in the rest of India. After 10 days of hearing on July 7, a direction was issued for partial restoration of the internet in Manipur by the High Court of Manipur. Primary objective as framed by the High Court has been to assess whether it is possible to provide limited usage of internet service to the public. Partial जो connectivity होगी जा सकती है. This is a constitutionally incongruent to judicial review for it avoids determining the legality of imposed orders. ठीक है, so ये कहते हैं कि constitutionally जो है ये incongruent है order. However, this follows an institutional grammar on internet shutdowns. How? In Anuradha Bhasin versus Union of India. First case, the Supreme Court failed to adjudicate or even one internet shutdown order. ठीक है, so Supreme Court को भी कह रहे हैं कि फेल होगी एंड किसी भी सिंगल इंटरनेट बैन पे
कोई जजमेंट नहीं दिया, एडजुडिकेट नहीं किया उस केस को. The decision right itself did not result in reduced duration of access, but for state competent authorities should review all orders suspending internet services. So state और competent authorities जो है उनको कहिए कि review करो related to all these bans. So its direction for transparency, Supreme Court direction for transparency in this case of Anuradha Vasim versus UI, that is the Union of India. So the publication of orders have not been implemented as yet, as seen in the flurry of cases and recent joint report by Human Rights Watch and the Internet Freedom Foundation. Bringing lasting damage, this case carved out greater flexibility for limited internet shutdowns. ठीक है? So bringing lasting damage, this case carved out greater flexibility. कौन सा केस? अनुराधा वसीम जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, but that he is letting it as a fair judgment. But somewhere it laid greater flexibility for limited internet shutdowns. ठीक है? With the possibility of access only to government websites, localized limited e-banking facilities, hospital services and other essential services. Of course, you cannot have a blanket ban because these are the essential services. For example, hospitals and all, these comes under essential services. You cannot shut down the internet of these, essential services. In those regions wherein the internet services are not likely to be restored immediately. So of course, जिन भी एरिया में इंटरनेट सर्विसेज को अगर रिस्टोर नहीं किया जा सकता इमीडिएटली बिकॉज ऑफ एक्सप्रेस रीजंस, सो एटलीस्ट ये जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज है उनकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको जारी रखा जाए. ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल connectivity. Next is judicial response. High Court of Manipur has acted in Congress with the judicial doctrine and practices by its order on July 7. It directs provisional access for leased lines, primarily used by the public departments and corporate offices, wired line services with signed undertakings of ban on social media, virtual private networks of VPNs and physical monitoring. So, High Court of Manipur ने उसने कहा कि जो इंटरनेट एक्सेस कर रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक डिपार्टमेंट्स थ्रू लीज लाइंस और वायर्ड लाइन सर्विसेज, ये और साथ में टेक्निकल ट्रायल फॉर वाइट लिस्टिंग. ठीक है? डिमार्केटिंग सर्टेन एरियाज और लाइंस ऑफ दिस रिलेटेड टू मोबाइल इंटरनेट डिटरमिन्ड बाय द हाउस डिपार्टमेंट. सो ये कहा कि हाउस डिपार्टमेंट जो है दैट इज होम सेक्रेटरी लेवल तक जो भी होम मिनिस्ट्री है जो मणिपुर की, ठीक है, उसको कहा कि ये चीजें डिटरमिन करो कि टू व्हाट एक्सटेंट इंटरनेट सर्विसेज will be provided to these users. There are no clear definitions on terms such as social media or examining continuing prohibition for internet users primarily through smartphones. Hence, in effect, a ban on internet access continues in Manipur. So, अभी भी जो ban है वो जारी है. ठीक है? The response of the Supreme Court has been one of judicial avoidance. So कहते हैं कि Supreme Court का जो response था इस केस में rather was saying Supreme Court somewhere avoided. No, it was a matter of judicial avoidance on the part of Supreme Court. ठीक है? The top court had an opportunity twice to adjudicate when a petitioner challenged the internet shutdown, and later when the state government itself appealed the order of the High Court for partial restoration. Even otherwise, it is peculiar as the Supreme Court is examining a broader issue regarding violence in Dingalung Gangmei versus Muttum Churamani Miti. ठीक है? So of course this case is the Miti and this community of Manipur itself. ठीक है? So this is the third case in this article. In this case, internet shutdowns are an inherent element. So again, this case के अंदर भी internet shutdown जो है वो indirectly mentioned है. For instance, the state government has in its status report dated July 10 before the Supreme Court cited the internet suspension as a security measure. So mostly state government यही करती है because of security reasons, public law and maintenance of law and order, we have banned the internet. Also, the Chief Minister on July 2020 has in a media interview stated there are hundreds of similar cases and that is the reason why the internet is shut off in the state. Okay. The vital role of information flow. Now is underlining the role of information flow. In an internet ban, misinformation spreads rather than abates. So कहते हैं कि अगर इंटरनेट बैन आप कर रहे हो तो भी मिसइंफॉर्मेशन, गलत जो अफवाह जो ये इंफॉर्मेशन वो फैलती है
rather their puppets कि नहीं करते, ठीक है? For instance, a press report dated June 1 by Owen Hennings Sitharov and published by the online portal NewsClick points out in chilling detail that this information served as a pretext for the perpetration of sexual violence against cookies of women. जो दो women थी, जिनके खिलाफ sexual violence हुआ. So somewhere this NewsClick published by online portal NewsClick, मानता ही है, ये प्लेटफॉर्म मान रही है कि कहीं ना कहीं जो डिसइंफॉर्मेशन रिलेटेड जो चीज़ें हुई हैं उसी की वजह से दिस वाज अ प्री कॉन्टेक्स्ट फॉर द परपेट्रेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, इस वजह से ये कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल वायलेंस हुआ है उसके रीजन हुआ है. फॉर मणिपुर द वीडियो क्लिप इज अ वाइटल मोमेंट फॉर नेशनल अवेकनिंग that must be achieved without any reputational and social harm to survivors of sexual violence and communal hatred. Information flows are also necessary to ensure the accountability of the state and central governments in taking steps to ensure truth, justice and reconciliation. So he is giving more, talking more about information flow rather than banning the internet as a solution. Accountability can only come when the courts improve on the precedent of the Anuradha Bhasin case and demand it from the state and central executive. So the question that needs to be asked again is, what was the propriety of the internet shutdown and role in our national apathy? We will never have these answers till we hear the voices of Manipur. ठीक है? So ये कहते हैं कि कोर्ट जो है उनको अनुराधा भसीन की जो केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास नहीं कहा, ठीक है, बस ट्रांसपेरेंसी की बात की कि जो भी शटडाउन आप कर रहे हो, जो ऑर्डर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ठीक है, बस इतना कहा. बट रादर देयर इज अ नीड टू रीलुक in this judgment and therefore improve upon this judgment by asking two questions, that is what was the propriety of the internet shutdown, ठीक है, legal ground क्या था इसका, and secondly the role in our national apathy, कि what is the role of internet ban or shutdown in the national apathy, ठीक है, कि लोगों को हमारे सिर्फ मणिपुर को छोड़ दे तो बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि मणिपुर में चल क्या है, ठीक है. So somewhere this Manipur accident should act like an awakening for the rest of India, ठीक है, कहीं भी हो सकती है ऐसी चीजें, ऐसे इंस्टांसेस. So therefore it is very important that we remain awakened. Fine, okay, and sympathetic as well towards these people of Manipur, especially the two victims of this sexual violence. Okay, so this article is another important one, giving you insights about the cases, about this internet ban and shutdown and all, ठीक है. Okay, this is related to Yamuna flood. Let us now quickly focus on the miscellaneous facts and figures. What's important from the preliminary exam point of view. So, National Commission of Women, Statutory Commission, remember, was informed of 6 incidents of violence in Manipur on June 12. ठीक है, so इसको inform किया गया है National Commission of Women को related to violence which took place against the women in Manipur. ठीक है. Next is Varanasi court orders archaeological survey of India this to survey Gyanvapi Mosque. Gyanvapi Mosque is in very adjacent to the Kashi Vishwanath temple. This has been used as well. So ASI को कहा है वाराणसी की लोकल कोर्ट ने कि सर्वे करो Gyanvapi Mosque related, because यहाँ पे कुछ हिंदू related कुछ चीजें मिली हैं inside this mosque. So of course there needs to be there is a requirement to survey the whole thing and then come up with the truth. Golden hour bartellate treating stroke, say new experts at the Hindu Wellness seminar. Of course, special court demands. Okay, politics. No need to discuss that. This is to Shinzo Abe. Abe genius playing ability to look beyond analysis. ये कहा हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने, ठीक है. द इम्पोर्टेंस ऑफ शिंजो आबे, India, Japan and the Indo-Pacific. So of course the role of this Shinzo Abe, the former Prime Minister of Japan, cannot be overlooked, especially with respect to the bilateral relationship between India and Japan. ठीक है, his contribution has been immense.
Impose president rule in Manipur. Congress Arjit Murmu. President. Then again, what is going on this page? You can skip therefore this page. CBSE ने कहा है Director Academic CBSE Joseph Emmanuel use any Indian language as optional medium. Says CBSE. Use any Indian language as optional medium. ठीक है? Not Hindi also. Schools must lay the foundation for multilingual learning as the higher education sector has already started to respond to the recommendations of the National Education Policy. ठीक है? So in line with the National Education Policy, any Indian language could be used as an optional medium at the schools. Now Supreme Court ने कहा कि you cannot ask government to recognize a language as official one. ठीक है? You cannot direct the government to recognize any language as official language. ठीक है? Because this is a domain of Parliament, of course. Okay. Government of India ने एक पोर्टल लॉन्च किया है where you can report the violation of ban on e-cigarettes. ठीक है? हमारे मिनिस्टर साहब भी कहते हैं रेलवे मिनिस्टर इन पास्ट 5 years over 1.08 लाख करोड़ स्पेंड ऑन रेलवे सेफ्टी. ठीक है? तो ये पोर्टल का नाम क्या है? ये पोर्टल हो सकता है हमारे लिए एग्जांपल टॉपिक से रिपोर्ट वायलेशन ऑफ बैन ऑन ई-सिगरेट्स. ठीक है? तो ई-सिगरेट को बैन किया गया, इसके लिए पोर्टल लॉन्च की गई है. देखते हैं हम कि पोर्टल का नाम कब बैन किया था? 2019 में. डिस्पाइट द बैन imposed by the government in 2019, e-cigarettes continue to be sold on e-commerce sites even to children below 18. ठीक है? इसलिए जरूरी हो जाता है कि Health Ministry has launched an online portal to facilitate reporting of violations under the Prohibition of Electronic Cigarettes, e-cigarettes. ठीक है? Act. PECA Act, that is Prohibition of Electronic Cigarettes Act. The portal name is www.violationreporting.in. Will allow faster action against any reported violations the government said. ठीक है? So remember the act is PECA, that is Prohibition of Electronic Cigarettes Act 2019, and the portal name is www.violation-reporting.in. ठीक है? इस पे आप ई-सिगरेट रिलेटेड वायलेशंस को रजिस्टर कर सकते हैं. Next page, world news now. Ukraine has started using US cluster munitions or bombs on battlefield. White House. सुप्रीम जो US है उसने माना है कि यूक्रेन ने जो US ने क्लस्टर munitions और क्लस्टर बॉम्ब्स दिए थे वो यूज करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है? So does it seems कि ये जो conflict चल रही है near term में होने वाली है. ठीक है? Because third parties are more interested in continuing with this conflict. ठीक है? Then the two parties involved are Ukraine and Russia. Okay. Next is business page. DGCA Director General of Civil Aviation ने allow कर दिया go first to restart flights with conditions. ठीक है? थोड़ा टाइम पहले इसको बैन कर दिया गया था. Okay. Finally, we have landed on the last sports page. Fine. Not that important. एग्जाम के लिए बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि कुछ बहुत ज़्यादा सपोज कोई विंबलडन लाइक मैच चल रहा हो, कोई वर्ल्ड कप चल रहा है. ठीक है? These are just a routine work on this matches and all. So that's it from my side. We have discussed, covered everything which was important from the today's newspaper, of course the Hindu. If you have anything, any doubt, anything, you can put this in the comment section. Until then, take care, keep revising. Fine, and stay tuned for the Monday Hindu analysis. Thank you.